हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पालकी खाल। आज हमारे साथ है ट्रैवलिंग बूट्स Hello, everyone. स्मृति, राइट? That's right. स्मृति Well like done, she's a Rahul. yeah देखो एक्चुअली स्मृति और स्मृति like बहुत बार कंफ्यूजन होता है ये। नहीं, ये I'm glad तूने कम से कम स्मृति बोला because across India बहुत accents में मेरा नाम बहुत destroy हो चुका है. Across the world that I've traveled, it's been destroyed in multiple ways. I appreciate your efforts. Thanks. ये वाला नाम एक्चुअली बहुत राहुल confusing बहुत है। difficult नाम है. राहुल बहुत वो ज्यादा। सुना भी नहीं है किसी ने आज तक. ये मैं बहुत सुन चुका हूँ। कल मैं एक पार्टी में भी था तो like मैंने बोला अपना नाम और ये तो सुना ही होगा। और सबको लगता है ना कि वो पहली बार ये जोक क्रैक कर रहे हैं, शॉर्ट मैन जोक्स, नेम जोक्स, टॉल मैन जोक्स, लेकिन सबने वो सब 40,000 बार सुना हुआ है, पर नहीं, जोक जरूर क्रैक कर रहे हैं। एक मेरे को लगता था पहले राज नाम है वो काफी राज एक्चुअली डायलॉग यही है ना, राज नाम तो सुना होगा या फिर राहुल ही है, मेरे को पता नहीं। राहुल था यार, राहुल ही था। शाहरुख इज राहुल, ओके ठीक है। और cool, हाँ राहुल ही है। So स्मृति का इंट्रोडक्शन, she is a solo traveler. Yes, I am. Right? Yeah. और आप ट्रैवल कर रहे हो काफी टाइम से, like Correct. more than 50 countries, right? Yeah, 49 right now. 49. Just 49. Oh, okay. मेरे को लग रहा था 50 से ऊपर है एक्चुअली। हो जाएगी, इस साल हो जाएगी। कहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो आप? This year probably Iceland. अगर पैसे अच्छे आ गए तो, अगर नहीं आए तो फिर अजरबैजान and a couple of other countries around it. Okay, अजरबैजान मेरे को हमेशा ऐसा लगता है किसी भाईजान का नाम है ना? हाँ। काफी countries कैसे नाम होते हैं? मेरे को पता है तो एक्चुअली कंट्री भी है, लाइक मेरे को भी रिसेंटली स्टार्ट वहाँ पे आई थिंक टूरिज्म अभी suddenly they are booming it, yeah. right? Suddenly they are pushing it. राइट, तो आप पैसों के ऊपर लाइक डिपेंड करके वहाँ पे जा रहे हो या फिर आइसलैंड जा रहे हो? Of course, of course. आपने फिर कब से मैं जितनी अमीर लगती हूँ नहीं। और मैं जितना मैं भी नहीं उतना अमीर एक्चुअली। ये जितना गरीब दिखता है उतना ही है। तो मैं स्मृति को मिला मेरे काफी डियर फ्रेंड आकाश मेहता के थ्रू। करेक्ट, राइट, आप उसके शो पे आए थे। करेक्ट, करण के साथ, राइट? हाँ है ना? मुझे याद है उस दिन आपने बहुत बढ़िया शर्ट पहन रखी थी आई थिंक। मैं उसको मेहता को मैंने दिखाई नहीं है क्या बढ़िया ना, ही कोई मेरे को लगा था उस टाइम पे कोई आप ऐसे डिजाइनर टाइप हो, लाइक क्लोथिंग डिजाइनर वगैरह। नहीं ब्रो, ये काफी सही बंदी है, लाइक ट्रैवल कर चुकी है अपनी जगह, इसके बाद स्टोरीज है। मेरे को लगा नहीं यार, ये लाइक मेरे को जानना चाहिए इसके बारे में और ज्यादा। Yeah, that circle somehow all of us had a very instant connect. Whether it was Siddharth who was also comparing the show, Akash के साथ तो like next level respect and love हो रखा था उस वक्त। Yeah, we all clicked very well. That evening went very well. Right. Crowd कम था लेकिन connection बहुत solid था। सिद्धार्थ को अभी तक याद हो आप, like मैंने उसको बताया कि मैं आज पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ। उसका मुझे आया है मैसेज, प्लीज मेरे थर्स्ट स्टेप्स के बारे में बताना पॉडकास्ट पे। क्या था थर्स्ट स्टेप, मेरे को नहीं पता है। So he does a lot of these gymming videos, no? Full एकदम sexy angles लेके, छोटे कपड़े पहन के, सैंडो फुल फंसी हुई, थाइस दिखा रहा होता है वो, राइट? तो उसे 1-1.5 महीना नहीं डाला, तो मैंने कहा कहाँ गया तुम्हारा थर्स्ट स्टेप्स? तो he said अभी आएगा वापस। उसका बहुत अलग है, जैसे कुछ फॉलोअर्स को बहुत पसंद है। Correct. और कुछ लोग अनफॉलो कर देते हैं वो स्टोरी डालते ही, तो who cares? वो बीच में आई थिंक थोड़ा केयर करने लग गया था, तब उसने रोक दिया था। But those are all phases we go through. And it's perfectly normal to go through those emotions, Rahul. Like there are times where you get so many compliments, सच में लगने लगता है हाय क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ, and then one random person sends one bad message and it stays with you, like it just fucking stays with you for some reason. And I know it's unhealthy, and हम जितना मर्जी बोल लेना कि oh I don't care, we do care. Someone says something not nice to us, we do care about it, and it's human to care about it. How you get over it, how you deal with it, how much tawajjuh you give it in your real life, that's also a process you go through, and it's perfectly normal. So if you took some time off, take time off. I myself, I just put my content out. I engage with a lot of people online who are my follower base. But do I spend a lot of time checking other people's reels? No, I don't, because the truth is, मुझे लगता है या तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी और मैं भी तौबा पे नाचने लग जाऊंगी कि मुझे लगेगा अरे सब करे तो शायद मुझे भी करना चाहिए, लाइक सबका इतना हिट्स आ रहा है, बहुत मुश्किल है वो करना। अब मैं पर आता नहीं अंदर से, या मुझे होता है कि अरे क्या बकवास कंटेंट चल रहा है आजकल, व्हाट आर पीपल वाचिंग। तो ईदर वेज इट्स ओके टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम राइट कंटेंट। दूसरी वाइब भी बहुत खराब है, यहाँ पे क्रिटिक बन जाती है, लाइक ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। मुझे लगता है इसके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर रही, लाइक नथिंग, वेयर इज योर
where is your depth of content? मैं सुंदर हूँ और मैं यहाँ परी बन के खड़ी हुई हूँ cannot be according to me, and it's limiting. It's silly of me also to think it, because people do like to see pretty people, men and women. But हाँ, वो अपने आप को उस नेगेटिव स्पाइरल में जाने से रोकने के लिए you want to step away from it, and ठीक है, थोड़ा कंटेंट आया, जिनको लाइक करते हैं उनका कंटेंट एल्गोरिथम तुम्हारे को पुश कर ही देता है, उतना ही काफी है. पुनीत सुपरस्टार. करेक्ट. तो ये ट्रैवलिंग का जो फेज स्टार्ट किया, लाइक वो कैसा फेज था? लाइक यू वांटेड टू एक्सप्लोर या फिर यू वांटेड टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम योर लाइक ना जो भी रूटीन था, डेली रूटीन? Mixture of a lot of things. I was in situations where I ended up traveling on my own a lot. Like I was posted to England for a few years. I was a training consultant before this. And weekends pe abhi kya karega? Like kuch to karega. Through the week, for me, Britishers were very nice people, very friendly, but they're not warm like us. I'm so Punjabi, like hugging and, you know, affectionate and chalo scene banate hain types. But wo England mein itna nahi hai. They have to plan a lot of things because they don't have help. तो अभी वीकेंड्स पे I started going on छोटा-छोटा, चलो यार राइट, उनकी क्वीन की भी वैसी वाइब है, बहुत दादी जैसी, बट एक्चुअली प्यार वाली वाइब, प्यार वाली दादी नहीं है वो. तो I started doing like day trips, सुबह जाके शाम को आ गई, but then some places were far, so I thought, but what I figured was that जितने भी हमें डर बिठाए हुए होते हैं, all our fears are essentially created by somebody else's one bad experience which he has shared with everybody, and it's then become a stereotype, and it's not true. Like girls should not travel alone. क्यों? इतने तो भसड़ केसेस दुनिया में आए नहीं है कि लड़की के ट्रैवल करने पे कुछ आतंकी हो गया है. उससे ज्यादा तो मेन के साथ हो रखा है. बट वो इतना बतंगड़ नहीं बना हुआ कि they are robbed on a constant basis. Some have been murdered. Some have been. There's a lot of shit that men have gone through. But ये नहीं होता कि अब वहां पे देखो 6 साल पहले ना उस सड़क पे एक बंदे का रॉब हो गया था, तो अब से बेटा तू घर से बाहर नहीं जाएगा, फॉरेन कंट्री नहीं जाएगा. Those stereotypes were not made for men. Those were made for women. And as I kept exploring, I figured, यार ये सही है तरीका. अभी ग्रुप में ट्रैवल करो, and I love my husband, but he and I are not similar travelers. I'm a more of an explorer. He already explores a lot. He's in merchant navy. So when he comes home, he wants to relax. उसको मुझे free breakfast के लिए मत उठाना, alarm clock तो दिखाना मत. कॉकटेल चाहिए अम्ब्रेला वाली स्विमिंग पूल पे. आई वांट टू चिल ऑन माय वेकेशन, व्हिच आई अंडरस्टैंड. और मैं सुबह 5 बजे उठ के मुझे अंकुर वाट पे सनराइज देखना है. तो वी फिगर्ड दैट इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग, स्पेंडिंग मनी एंड bickering with each other and not being in a good mood, we can do things separately. Just because you're a couple, it doesn't mean you have to get along on everything, you have to agree on everything, you have to enjoy everything. We can like different movies. And that's healthier, because then I think your knowledge also expands. You're not just limited to what I know is all I know. Now I know what he also knows, or what his perspective is. Sometimes I agree, sometimes we disagree. And that's what a good communicative marriage is, according to me. Or relationship is not just limiting it to marriage. ऐसे, you know, like plan करके you also get time to, अगर कुछ बात अच्छी नहीं हुई, like तुम्हारा कोई, you know, like discussion हो गया कि like problem, like अग्री नहीं की किसी टॉपिक पे, राइट? बट तुम्हारे पास अपना स्पेस है सोचने के लिए उसके बारे में, राइट? बिकॉज यू नो कि हाँ चलो मैं अभी जाके सिप करूंगा 2-4 और स्विमिंग पूल में, तो फिर मैं सोच लूंगा इसके बारे में, एंड देन यू गेट टू टॉक, फिर तुम आराम से बात कर लेते हो मेरे ख्याल से. लाइक काफी we've got our own system, and it's working for us. I don't मैं profess नहीं कर रही है, but I'll give you one very, very cute thing that happened. Suraj was turning 40 and we were driving through. My gift to him was that I planned a route of driving him through 40 cities across India. So we were living in Chennai that time. We went all the way down to Kanyakumari. Then West Coast kiya. Didn't go Goa side. You were driving? Both of us were driving. Okay. Because some days were long drives, so we would split. And then we cut through Hampi into Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, Bihar, Sikkim, Assam, Meghalaya. फिर बाहर निकल के उत्तर प्रदेश करते हुए आए. Life changing. अब उनमें से एक दिन we were on really bad roads, and GPS was telling us to continue on that bad road, और वो highway बना नहीं था उस वक्त. So I have a spine condition. I have a fractured spine. So on bad roads, तो मेरी बैंड बज चुकी थी. Like I was in tears. Every little bump was making me scream.
So I was losing my cool. So I'm screaming at him कि ये तरीका लो, वो उस तरफ से लो, तुम सुन नहीं रहे हो, GPS की सुन लो, वो अपने calculation लगा रहा है कि let's go back to the previous highway. And it was a very tense and unpleasant drive for both of us. He didn't react that time. He let me vent as much. When we got back, he said a very sweet thing, and it's something that we've held on to in our relationship also. That he also didn't know what was the right way. Right. I also didn't know what was the right way. But we have to reach to a place where we agree on something and then we stick to it. Right. So he said, "Jan, तुम्हें भी नहीं पता था कौन सा better route है, मुझे भी नहीं पता था." But उस वक्त, because I was also stressed, you should have been a little more supportive towards me and let me make a mistake also and stay with me in that mistake. So I think travel makes you explore a lot of perspectives of your relationship and communication also. अभी गुस्से में तुम इन कार में जब बंद हो ना, तो तुम्हें resolve फटाफट करना पड़ेगा because अच्छे फोटो अपॉर्चुनिटीज खिड़की के बाहर से जाए जा रहे हैं, you're like, अरे यार अभी कैसे ईगो को छोटा करके इससे मना लूं कि फोटो अच्छी आनी चाहिए या ये मोमेंट कैप्चर हो जाए. राइट, या फिर आप एटलीस्ट उस मोमेंट में रह सको. Correct. Because you're on that road only for once in your life. We'll never do that thing again. So लोग बोलते भी है कि लाइक जब मैंने डेटिंग वीटिंग स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब पहली बार टिंडर आया था, तो मेरी डेट तो ऐसी थी, लाइक हम ट्रैवल सीधा कसौली चले गए थे घूमने के लिए. और मेरे काफी लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग साथ में ट्रैवल कर पा रहे हो, लाइक दैट इज अ गुड साइन. Yes, it is. Yes, it is. I have lost friends and I have no complaints about it. Okay. A lot of people are like, "अरे तू travel blogger है, चल एक हफ्ते travel करते हैं." I'm looking at them saying, "No." तुम नहीं जानते. I as a person can be extremely friendly, caring, nurturing. I can put your needs first in this situation while I'm here. But when I take a vacation, I need a vacation from being myself also, because it's very tiring to constantly take care of someone else. But those days, I want to only take care of myself. चाहे मुझे बोर होना है, चाहे मुझे बोर्डम से निकलने का तरीका ढूंढना है, जो भी करना है मुझे, जो खाना है मुझे, वो सिर्फ मेरे decisions चाहिए. I don't want anyone else's decisions in it. So solo travel became very inherent to me and almost like now my meditation, because through whatever I'm doing over here, extremely high social networking, this, that, when I go away, I just want to listen to my inner voice, quiet down, listen to the waves, let nature talk to me. I just need that blanked out space. So that's why the whole solo travel. काफी introvert sound कर रहे हो, like है ना, right? काफी. मेरे को नहीं लगा. काफी. But I keep my personal life personal. That's it. क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लाइक ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बहुत डेफिनेशन चल रही थी, और लाइक हम दोनों का प्रोफेशन ऐसा है, राइट? आप भी इंट्रोवर्ट हो, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, बट हमारे प्रोफेशन में हमें कॉन्स्टेंटली लोगों से मिलना है, बात करनी है, राइट? तो मेरे को लोग ऐसे बोलने रहते हैं लाइक तू नहीं है इंट्रोवर्ट, तू एक्सट्रोवर्ट है, लाइक ये सब बोलना छोड़ दे. तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, मे बी मैं चेंज हो गया हूँ, लाइक मैं भी एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ. बट फिर मैंने एक डेफिनेशन देखी, मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, किसी ने सोच रहा था, तो उसने मेरे को काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि आप इंट्रोवर्ट कब हो, कि लाइक अगर आपकी एनर्जी जो है वो आपको क्वाइट टाइम से आपको मिलती है, तो देन यू आर इंट्रोवर्ट. और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप लोगों से हैंग आउट करना ही, लाइक आपके लिए आपको एनर्जी वहीं से मिल रही होगी. तो लाइक वेरी नाइसली पुट, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ मैं थक जाता हूँ लाइक लोगों से मिलके, लाइक हो जाता है. Of course it is exhausting. Every few months I need that little space away to just get away. That's it. Re-center and then come back. I'm cool with it. I have no problems with this social life, and because I like a day where I'm so busy that when I get back home, जैसी bed पे जाऊँ, फट से नींद आ जाए. I think that's the biggest blessing one can have, that you're able to sleep एकदम से. And that's my fight every day. मेरा agenda क्या है सुबह का? पूरा दिन इतना हसल करना है कि घर जाके बस सो जाना, बस. That's it. तो फिर आपका जो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं अभी, लाइक हस्बैंड के साथ ट्रैवल किया, वो ट्रिप पे प्रॉब्लम आई काफी, लाइक आपने वो रोड वाला जो था, तो फिर रोड आपको मिल गई थी लास्ट में सही, लाइक? Of course. That was just one of those really. कितना टाइम लगा था पूरा ट्रैवल करने में? 1.5 months. Oh, yeah. It was a proper 50 days trip, more than 1.5 months. And we celebrated his birthday every single day. He's the luckiest man alive. Exactly. But our country is just, so we think we are proud Indians, right? Like, proud Indian to whom hai? But now after doing this trip across India, I think I became a proud Indian with a reason. You say something and I will correct you, because now I know the
anthropology, anthropology, Right, right. anthropology, the history, the great people we were, the capacity we have. Like मुझे news channel जितना मर्जी बोल दे यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है, मैं convince ही नहीं होती because when I drove through the most rural parts of India and if I got stuck or my car got stuck, किसी ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, किसी ने मुझसे मेरा religion नहीं पूछा before helping me. From the poorest to the richest, if you gave respect, I got 100 folds back. That's the only trick I had in my sleeve, that I was respectful to everyone. If I was requesting for help, I was requesting for help. And I was helped all across this country by people who were absolutely unassuming, who I thought, ये क्या help कर सकता है? हमारी गाड़ी कहीं अटक गई थी, किसी ने अपने काइनी से हमारी गाड़ी को निकलवाने की हेल्प करवाई. 2-3 लोग काइनेटिक. ओ अच्छा अच्छा हाँ. काइनेटिक से. So like unreal experiences of real people. So if someone tells me कि अरे यहाँ tension चल रहा है, वहाँ tension चल रहा है, I understand. I can demarcate people from politics. That this is not a people problem. This is a politics problem. So I will not generalize कि कलकत्ता में ऐसे होता है, चेन्नई के लोग ऐसे हैं. It's silly for people to generalize it. Right, और उनसे right. पूछो कि क्यों तुझे चेन्नई में क्यों बुरा लगा? अरे वहाँ का ऑटो वाला बहुत रूड है. अच्छा बता तुझे फ्रेंडली फन वाले ऑटो वाले कहाँ मिले हैं? नहीं वो तो कहीं नहीं मिलते. आई सेड तो तेरा एक बैड एक्सपीरियंस एक ऑटो वाले की वजह से तूने एक जियोग्राफी जहाँ मिलियंस लोग रह रहे हो सबको जनरलाइज कर दिया. सब कमी ना है. What logic is this? How silly and shallow for us to generalize. And बस इतना ही करना है. ज्यादा लंबे फ्रेंड्स नहीं रहते. हाँ मेरे ज्यादा लंबे कुछ एक ही है जो इतने सालों से झेल पाए हैं. और भी लोग ऑफेंड भी आते हैं कि मेरे को समझा दो वाली चीज के लिए. हाँ नहीं तो हाँ मैं हाँ क्यों नहीं मिला रही. हम लाइक लॉजिक नहीं है ब्रो. तू बोलना तेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ, चेन्नई खराब है, ये कैसे हो गया? ये लॉजिक नहीं बैठ रहा. लाइक जनरलाइजिंग तो लाइक आप घूम के ना ये भी सीखते हो, डिटैचमेंट थोड़ा आता है आपको अपनी आइडेंटिटी से भी. राइट बिकॉज मेरे को लगा ट्रैवलिंग एक बहुत हेल्प करती है आपको कि आप अपनी जगह से डिटैच, अपने कल्चर डिटैच हो जाते हो, फिर वहां पे जाके आप समझते हो. करेक्ट. तो यू नो लाइक जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मैं हिचहाइकिंग जब कर रहा था. हाँ. तो सबसे ज्यादा मेरे को ना हेल्प सबसे गरीब लोग ही कर रहे थे. लाइक जो लोग ऑलरेडी ट्रिपलिंग कर रहे हैं ना, मेरे को उन लोगों ने लिफ्ट दिया है. It's true and it's true across the world. वही. और लोग नॉर्मली जनरलाइज करते हैं कि लाइक वो लोग उससे थोड़ा दूर है ना, ये शेडी दिख रहा है, बट एक्चुअली वो लोग आगे बहुत हेल्प कर देते हैं. करेक्ट. और ये चीज आपको आई थिंक ट्रैवलिंग करके ही पता लगती है. राइट. Beautiful thing happened when we just started. हम लोग मदुराई पहुंचे थे. We wanted to go to that मदुराई temple. And हमने गाड़ी बहुत दूर पार्क करी बिकॉज पुलिस ने बोला यहाँ पे पार्क कर. तो एक रिक्शा वाला आया, उसने बोला कि आओ मैं आपको मंदिर तक छोड़ देता हूँ. And it was barely 200 meters, but it was Chennai is very humid, like all of Tamil Nadu is extremely humid. हम बैठ गए, हम पूछा उससे Evalavu means how much, and I like picking up local words, right? At least how much, thank you. ये बहुत हेल्प करता है एक्चुअली आपको. Absolutely. They feel you have respected their culture, then they'll dulo with pyar over you, like इतना प्यार. As a पंजाबी आपको ये चीज काफी अच्छी भी लगती होगी, राइट? I love it. सेम चीज मैंने पंजाब में देखी है, लाइक पूरा प्यार एकदम. हाँ, full affection. No, उसमें कुछ नाप तोल के नहीं है फिर. बिल्कुल भी नहीं. So हम बैठे and now he's telling us, helping us with this. He got our car parked in a very safer spot. हर चीज में ना बहुत हेल्पफुल हो रहा था. I got very like, I said सूरज जी बहुत जोर से पेलने वाला है, बहुत पैसे लेने वाला है ये. थोड़ा careful. Let's ask him how much he's expecting before all this happens. Now he didn't take a penny from us. He said, Bhagwan. Oh. Because we were very close, but we needed a lot of help. So he helped, like call the cop, explain to him that we are traveling, and उसका क्या चला था? 50 रुपए भी ले लेता हमसे, 100 रुपए भी ले लेता. दिए हमने, but he refused. He said, no, I'm just helping. Bhagwan, like khalas. So no, I've had some, and there's so many stories like this. Bali mein an absolute random stranger. His name is Punuvasu. I lost my hotel booking. I was stranded. I was stuck. And he just said, "Teko chai banani aati hai?" I said, "Haan." "Adrak wali?" I said, "Haan." He said, "To ghar pe reh le." And he gave me his house key, and I stayed with him for 5 days in Bali. An absolute stranger opened his house to me. He and his wife. Like, I've never experienced something like it. I will never invite a stranger to my house. I would have not. Now I would. If I'll trust my instinct, now I will, because I'm like, I have to pay that thing forward. Right. So I'd gone for this trip to Himachal.
this boy was coming back. He's also a stand-up comedian, and he had a stopover over here. So he was asking me कि कहाँ पे क्या सस्ता this that. I said तू घर पे रुक जा. The next morning he got up, he couldn't get over. He's like, Smriti, I can't get over. You took a stranger in. I said, because I'm paying it forward, dude. Like, I have to trust my instinct. The world is not evil. It's okay. It wasn't a big deal in my head because घर खाली पड़ा है. 3-bedroom घर है. तू आकर रह ले 1-2 दिन. मेरा क्या चला जाएगा? कितना ही खा लेगा तू? क्या कर लेगा? सही बात है, कितना ही खा लेगा. Correct. Right. But I think travel has every place that I've traveled has changed one more aspect of my personality. I feel like a better person and a more honest person now. Right. Honest. आप गिविंग भी होते हैं बहुत ज्यादा, like क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट जैसे बताया कल्चर से होता है. हाँ. आपको चीजों के साथ भी आता है, फिर यू फील लाइक ये सबके लिए है, like ये जस्ट मेरे लिए नहीं है. हाँ. So I can like give it to people as well. ये कॉमिक कौन सा था वैसे, like मेहता ही था क्या? नहीं और है नहीं. We are victims of a societal good girl, good boy oppression, which is very undertoned. We as people are hunters, right? In our DNA, we were hunters. And the way the wild can predict any kind of unsafe situation, so can our bodies. If you take a step back, your body has identified a threat way before your mind has processed it. Your arms fold ho jayenge, you'll take a step back, you'll start pushing back. Like, your body will always tell you that this is a threat situation. You don't want this. But be a good girl, सबकी respect करो, तमीज से बात करो. हम उस गाब में इतना रहते हैं that we stop listening to that. People pleasing as well, है ना? हाँ. तमीजदार ना. कोई बदतमीजी भी कर रहा है तो if uncle is touching inappropriately, uncle क्या कर रहे हो करके हट जाओ. What nonsense. Like, it's right. It's so messed up at so many multiple levels. In my solo travel, that instinctive voice has become very clear. If my instinct clicks with you, I'll be the sweetest person you know, most loving, most generous. The people I don't click with, na Rahul, एक बार जाके उनसे बात करेंगे. Some being और चीज़ से बदतमीज, and I am. I'm perfectly comfortable being बदतमीज. जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद. सेम मेरे को ट्रैवल में पूरा गैस लाइटिंग वगैरह मैं ट्रैवलिंग करके भी सीखा हूँ. कैसे लोगों को कैसे उनको. करेक्ट. क्योंकि आपको मिलते हैं लाइक लोग ऐसे. हाँ. हमेशा लाइक ट्रैवलिंग में कोई होगा जो आपको ज्यादा सिखा रहा होगा. हाँ. अरे मेरे तो पहले ये फंडा होता था. I had to make a reel on it. कि दुनिया में ना 2 ही टाइप का लोग होता है. एक जो तुमसे पूछेगा अरे तू ट्रैवल करके आया कहाँ गया, यू टेल मी. दूसरा होता है अरे तू यहाँ नहीं गया, फिर क्या ट्रैवल किया, अरे तू वहां नहीं गया, फिर कोई बात नहीं है, तूने यही नहीं देखा. And I'm looking at them like, तू क्या, let me tell you what I saw, what I experienced. You may have experienced another part of that city, I have experienced something else. तो मेरे दिमाग में ना वो 2 तरह के लोग हैं. Right, ये patronizing types कि अरे ऐसे रियल एस्टेट में भी यही होता है कि ये आएंगे ना कि ओ यू डूइंग रियल एस्टेट, अरे यू शुड हैंग आउट विद अस, हम तुम्हें अच्छे कनेक्शन से मिलवाएंगे. आई नो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. आई एम लुकिंग एट देम सेइंग तो मिलवा, इतना डींगे क्या मार रहे. वही मेरी फील्ड के बारे में भी यू नो बेटर. अरे मैं यहाँ पे बाय द वे हाँ मैंने हम फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. राइट. रियल एस्टेट ना क्या बोलेंगे, डीलर, ब्रोकर हूँ मैं. ब्रोकर बिल्कुल नॉन मिंसिंग ऑफ माय वर्ड्स. ब्रोकर हूँ ब्रोकर. राइट. आप लाइक कोई भी देख रहा हो प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है तो लाइक यू कैन आल्सो कनेक्ट विद देयर एज वेल. गुड़गांव. मेरा कल एक दोस्त आया श्रीलंका से. तो उसको भी यही प्रॉब्लम थी लाइक क्योंकि वो आया, उसका प्लान था कि उसने बहुत टाइम से अपने स्कूल के दोस्तों से हैंग आउट नहीं किया था. राइट. तो सबका अपना मैंने देखा गोल होता है ट्रैवलिंग का कि लाइक मेरे को इस बार क्या करना है. या फिर या तो आप घूम रहे होते हो कि एक एक जगह विजिट करनी है कि लाइक ये भी देख लिया ये भी देख लिया. अभी चेकलिस्ट होती है ना, बकेट लिस्ट. तो उसके साथ ऐसा हुआ कि वो गया वहां पे और वो लोग ने कुछ किया नहीं. लाइक उन्होंने जो अपना विला लिया था वो 8 दिन ऐसा जो भी जगह घूम रहे थे, बट मोस्टली वो लोग विला में ड्रिंक करके लाइक बहुत अच्छा टाइम निकला उनके. दूसरे खेल रहे थे, स्विमिंग सीख रहे थे, वो सब करके आ गया. और फिर उससे किसी ने बोल दिया कि लाइक ब्रो ये तो तू यहाँ पे भी होटल बुक करेगा. नहीं, वातावरण हेल्प्स. वही वातावरण हेल्प्स एब्सोल्युटली. तो जैसे मुझे लगता है कि इफ आई एम गोइंग टू गोवा तो मैं वहाँ पार्टी नहीं करने जा सकती. पार्टी मैं गुड़गांव में ही कर रही हूँ यार. वही म्यूजिक है, वही तौबा चलेगा, वही कुछ घूम फिरा के वही गाने. कोई अलग
like I prefer the live music scene in Goa, right? कि कुछ नया, some new energy exchange. But नहीं, ये whole concept of checklist is my absolute no. I don't do Google. I do not check 5 must see places, 5 must explore restaurants. ना मैं ये list बनाती हूँ, ना मैं पढ़ती हूँ. मुझे लगता है once you go there, pick information from the locals. Let them tell you what they do. मेरे को हम्पी में ऐसा मेरे को हेल्प किया था ये चीज. Let them tell you what they do when they want to take a break in their city. Right. That will give you information. Wow, हाँ actually. Open Google Maps. कोई interesting place देख के वहाँ चले जाओ. पर ये list वाला system. तो वो यही पूछ रहा था, क्या था मेरे को आज की पॉडकास्ट पे ये चीज पक्का पूछो कि लाइक व्हेन यू डिसाइड टू ट्रैवल समवेयर, लाइक वो तो ग्रुप में गया बट यू ट्रैवल सोलो है ना. तो हाउ डू यू लाइक प्रिपेयर फॉर इट कि लाइक मैं कोई चेकलिस्ट होती है लाइक आई हैव टू गो टू दिस प्लेस या फिर जस्ट गो ऑन द फ्लो. मैं ग्रुप में खेल ही नहीं रही. मैं नहीं जाऊंगी 20 मिनट बैठ के मेन्यू में क्या डिसाइड करना है, किसको क्या खाना है, मैं नहीं कर सकती. माय टाइम इज extremely precious to me. I cannot waste it on my vacation. I can't waste it on your preferences. So that तो ना मेरे पास suggestions है कोई. मैं तो बोलूंगी मत जाओ. जाना है तो ऐसे ग्रुप के साथ जाओ जहाँ पे कोई कलेशी ना हो. मस्ती करके आ जाओ वापस. चाहे तुम 10 जगह घूमो, फिर तुम्हें बस लेके 10 जगह घूमना है तुम वो कर लो. जिसको जैसे ट्रैवल करना है करो. My concept of even travel blog was just travel. Just travel. And I love quoting my anecdote on this, that if I tell you today that इस गार्डन में जा राहुल, यहाँ पे एक एप्पल ट्री है, बेस्ट ट्री है वो वर्ल्ड का, मस्ट गो एंड सी इट. तो जब तू वो गार्डन में घुसेगा ना, तेरा पूरा फोकस सिर्फ वो एप्पल ट्री ढूंढने में होएगा. इट्स अ टनल विजन. इट्स वेरी लिमिटिंग. पर मैं देखो बोलू ना, तो कुछ भी कर, वो गार्डन ही इतना सुंदर है, तो सब एंजॉय करेगा. So even a little mushroom you find na, will be something that is your connection to that garden. Right. And that's the beauty of travel. Like the moment you tell a person, ये 5 चीजें नहीं करी तो तूने Paris नहीं देखा, you've limited them. Because Paris is on the streets. Paris is in a cafe. Right. Paris is in walks. It's when the Eiffel is lit. It's when the Eiffel has switched off. Everything is Paris, and everything has a story to tell. It's not limited to the Louvre. There's a Musée d'Orsay, which is a museum only doing Impressionist era of painting. So there is just so much that a city has to offer, and not just Paris, even Gurgaon, I think, or Delhi. If someone was to come and just think Qutub Minar is Delhi, I would think that's so limiting. It's got nothing to do with the real culture of today. Go to Habitat Center, go to Dilli Haat. There's so many other things that are now more relevant for a representation of Delhi. That the lists are limiting for me. They're a stray jacket for me. नाइस. क्योंकि वो भी सो कंफ्यूज हो गया. लाइक कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक जब कहीं जाके आते हैं और ऐसे कोई आदमी मिल जाता है जो बोलता है कि अच्छा तूने ये जगह नहीं देखी तो लाइक क्या फायदा उधर जाने का. करेक्ट. तो काफी लोग दुनिया में 2 टाइप का लोग होता है. काफी स्टूपिड भी लगता है मेरे को कई बार. तो लाइक यू ऑल योर ट्रिप्स लाइक यू जस्ट गो देयर, फिर यू गो विद द फ्लो, है ना, कि लाइक कैसा. And my biggest problem with a Google search is that it'll show you the best image taken in the best light by the best photographer first. और तू वहां जाके बोलेगा नहीं दिख रहा है तो this is nothing. Right. Like what I saw, ये तो रील वाला सुंदर है ही नहीं. And you're aware that reel has been edited. It's been edited, it's been beautified, it's been लोगों को कट कर दिया तुम्हें वो सॉलिट्यूड और अमेजिंगनेस दिखाने. तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम्हें उसी जगह जाना है. And that personally it's limiting. Right. It's limiting. जो फेस्टिवल्स होते हैं लाइक ये, क्योंकि वो कौन सी मूवी थी वो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मत बोलना, बस टोमेटिनो के अलावा और कुछ भी बोल ले. लोगों को ये भी होता है कि लाइक कि अच्छा वृंदावन में एक बार होली खेल लिया या फिर वहां पे कोई फेस्टिवल देख लिया, तो ये भी एक चेकलिस्ट में होता है. लाइक आपका कोई ऐसा था फेस्टिवल जो लाइक व्हिच यू रियली लाइक्ड अटेंडिंग, या फिर? No, not yet. There's a lot of cute things that happen in England, which are just छोटे parades of just kids going along, छोटे days पे whatever. I have enjoyed those a lot. Already काफी अच्छा साउंड कर रहा है, क्यूट. हाँ, बच्चे ना अपने आप छोटे में कुछ टिड्डी बन के घूम रहे हैं सड़क पे. It's sweet. No, I've not even had a fascination towards any of these. हाँ,
मूवीज की वजह से मार्डी ग्रा के लिए एक बार दिमाग में आया हुआ है कि यार हाँ मेरे को भी हो जाना है एक बार तो एक्सपीरियंस करना है लाइफ में. हाँ उसके अलावा नो. And I'll give, I know it's a trending song and I love the song except that it's overplayed now. Like तौबा तौबा जिसे overplay हो जाता है ना, अब जब सबने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद सबने टोमाटीना कर लिया, तो I'm like, even as a blogger, even as a content creator, my perspective is ये तो जानते ही है ना सब. अब where can I add value? There is no value that I can add. It's a Bollywood movie now. So मेरा वहां जाके मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. जान को जोखिम में डाल के बुल के आगे भाग के नहीं, तो हाँ. मुझे जीना बहुत पसंद है. एडवेंचर स्पोर्ट्स में जिंदगी एक ही बार मिली हुई है मुझे. मैं अच्छे से जीऊंगी सेफली थोड़ा सा. हाँ. एंड एज अ सोलो ट्रैवलर तुम्हारे पर्सपेक्टिव भी अलग होते हैं. तो लाइक मैं भी इतनी बार ऋषिकेश गया, मैंने आज तक वो रिवर राफ्टिंग वगैरह कभी नहीं ट्राई किया. करेक्ट. मेरे लिए भी इतना देख लिया ना, आई एम लाइक शायद मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है. हाँ, बहुत देख लिया है एक्चुअली. वो हर बार ही वहाँ पे जर्मन कैफे है, लाइक वो कौन सा लक्ष्मण झूले के साइड में एक जर्मन कैफे है ऋषिकेश में. राइट उधर बैठे रहो तो हर 5 मिनट में एक वेव आती है साउंड की. वो लोग चिल्ला रहे होते हैं और अचानक से आपको ना ऐसा होता है कि आप चले जाते हो ना कि सीन में. आप इमेजिन करो तो आप वहाँ पे बैठे होते हो, आप वहाँ पे रिवर का फ्लो आपको लाइक पता लगता रहता है कि हाँ पानी बह रहा है यहाँ पे. और अचानक से रिवर इज ब्यूटीफुल बहुत सुंदर लगती है मेरे को. तो फिर अचानक से ये लोग आए थे चिल्लाते चिल्लाते. तो फिर दिखता है कि हाँ ये तुम लोग यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, है ना. You know this there's such a delicate balance between experiencing someone and over tourism. I think I have developed a very affectionate, beautiful relationship towards nature and wildlife. Is this bothering you? No. Okay, good. हाँ थोड़ा बहुत. उनको एक दो 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं ना. हाँ ले सकते हैं एक्चुअली. 5 मिनट ब्रेक ले लें हम लोग. तो हम लोग हमने अपना ब्रेक ले लिया है 5 मिनट का, जो भी हमें बुक ब्रेक चाहिए. थोड़ा बहुत. वो बच्चों को भी चुप करा दिया हमने कि लाइक अभी उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो. हाँ. लाइक अभी वो खाना खा रहे हैं. हाँ स्मृति अपने रूट साइड की बात कर रही थी, मैंने देख लिया अभी वो. तो हम लोग अभी लाइक स्टार्ट करते वहां पे लाइक हमने, मेरे को याद नहीं हम पहले क्या बात कर रहे थे. बट ना हमारा फ्लो टूट चुका है. फ्लो तो टूट चुका है. तुमसे क्या झूठ बोल रहा. बट लाइक सो कल्चर डिफरेंस. हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट अभी तक का ट्रिप कौन सा आपको लाइक अभी तक लगा है कि लाइक हाँ ये वाला ट्रिप मेरे को हमेशा याद रहेगा. This is one of my favorite questions. The truth is I've had a beautiful connection with each and every place I've gone to. If it was Khubsurat, wow. If it was horrible, great story. Even bigger wow. But I really feel, thank you. I really feel that in today's time now, everyone is selling happiness too hard. ये खरीदो खुशी मिल जाएगी, ये कर लो खुशी मिल जाएगी, ये क्या रेजर यूज कर लो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, ये सेंट लगा लो. मतलब सब खुशी इतना डेस्परेटली बेच रहे हैं कि लोग वो फेक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है. फेक पॉजिटिविटी कि अब वो सेंट लगा के, वो शेव करके, वो गाड़ी खरीद के बंदा बाहर निकले कि अब तो मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन खुशी नहीं मिलती ना. द ट्रूथ इज तो वो सब पैसा खर्च के भी वो सैड बैठा हुआ है. ट्रिप से भी जाए कई बार लोगों का होता है कि लाइक कई बार आप देखोगे लाइक मैं इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर रहा हूँ. हाँ. तो वो पूरा दिखाता है कि टॉक्सिक टूरिस्ट कल्चर, उसका नाम ही ऐसा है. हाँ. तो वो दुनिया भर के टूरिस्ट दिखाता है जो कुछ ना कुछ जाके खराब कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं. करेक्ट. तो वो वहीं से ही आता है जहाँ पे क्योंकि उनके दिमाग में एक बन गया है कहीं जाने से पहले कि अगर कोई गोवा जा रहा है. हाँ. उनके दिमाग में पार्टी का आ गया कि लाइक फिर उधर जाएंगे. थलासा, तितली. तो वो लोग जाते हैं, फिर उधर उनको पता रहता है कि यार तो बहुत बड़ी जगह है गोवा. तो लाइक कई लोगों को गोवा स्टेट है वो भी नहीं पता होता. करेक्ट. उनको लगता है गोवा एक सिटी है, बस वहां पे जाके सारे बार. और नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा है, कहाँ पे रह रहे हो वो नहीं पता. वो नहीं पता. फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैंने देखा है कि. करेक्ट. सो लाइक फॉर मी ट्रैवल meant experiencing a place with one all my 5 senses. मुझे सिर्फ फोटो खींच के खूबसूरत लग के लिमिट नहीं करना था. राइट. I wanted to talk to the locals, which is your touch. You want to interact with them. You have to eat the local food. If you won't eat the local food, half the story of every city is in its freaking food. You have to eat it. पसंद आया नहीं आया वो secondary है, but try करो. Right. Walk through the street.
take the smells that come, चाहे जो weather का है, humidity है, अच्छा है, जो भी है. You have to experience travel with all your five senses. Listen to the local music, step into a local bar, hear some live music. Similarly, for me, our basic emotions are equally important. Our this over focus on happiness has led to even more depression. This desperate need to be positive in the most shit situation is stupid. Right. For example, I'd lost my neighbor who I was really emotionally connected with. Wonderful aunt. She and I became friends, and I lost her some time back. And there was this sudden pressure कि चलो चलो खुश हो जाओ कोई बात नहीं, you know, she lived a good life. And I said, okay, but I'm not happy right now. Why should I smile when I'm not happy? I want to grieve her loss, right? And it's natural for me to. No, she won't be happy if you're crying. I said, how do you know? साला मैं जब मरूं मुझे तो मन होगा कि कम से कम 4 लोग तो 5 दिन रोए यार. इतना तो मेरा impact हो किसी की जिंदगी में. How you don't even know her, but you're assuming she won't see. Maybe she's happy that I'm missing her. I miss her even till today. And I like that fact. And it's a good thing for me to cry still about her. If I'm angry about somebody, if someone said something abrasive towards me, and I feel defensive about it, I will express that defense. I will not let it pent up in me and then explode one day like one pressure cooker. No, I feel all emotions are important. Having said that, there are multiple places that give me insane joy, insane happiness, images I'll never forget. But it was the places that moved me and made me cry that now are the closest to me. Because for a tear to come out, na Rahul, there's a lot that happens in your body, mentally, psychologically, physically. Like so many things have to happen for a tear to come out in a strange land towards strangers. So for me, like that happened in Rwanda. Okay. I had gone there. One, I saw the silverback gorillas, which was overwhelming. Then I went to the Genocide Museum, and to know that I was about 13, 14 years old when this happened, and I was unaware of it. रवांडा वहीं पर जहाँ पे उनका जो डिक्टेटर था, जो कैनिबल था, आई थिंक वो दूसरा, वो युगांडा. That's another country. Rwanda is where genocide happened, where locals killed each other. They killed each other. So, and hundreds of thousands of lives were lost, and they're still digging up graves. And they killed babies with machetes. So yeah, that was like, I still get goosebumps. To be in Sri Lanka on the 10th anniversary of tsunami was very intense, because the surfers go into the sea, they form a circle, and you all just stand on the beach. 25th Christmas night ko tumne wahin pe party kara hai. 26th subah you're standing on the same beach, just paying your respects. And I have no idea why I was crying. I hadn't lost anybody personally, but that mahal was just so. मैं तो अभी सोच के रो रहा हूँ. Yeah, it was electric. Tsunami बहुत, you know, like it was a big. And I was at the worst spot. I was in Hikkaduwa, which was the worst hit. It was the tip of Sri Lanka. Then I was in New Zealand, and there's a spot in New Zealand where the world's biggest bird, which is an albatross, and the world's smallest bird, which is a little penguin, come at the same spot for mating. Kiwi तो नहीं है ना, like not kiwi. No, sorry. They both come at the same spot for mating, and रात हो गई थी काफी. We were waiting for the penguins to come back. They link arms and create a little raft and come towards the beach. And wait करते करते, I looked up at the sky and I saw, like cartoon movies में इतने stars नहीं दिखा सकते जितने मैंने उस रात देखे थे. Like I think I saw the Milky Way galaxy. It was so beautiful that the tears were just falling out of my eyes, and my guide over there is like, "Are you okay?" I said, "I'm just so happy. I've never seen so many stars." Wow. But you know, that moment is etched in my head. Like, I think tears are extremely important, and I'm glad that now men crying is being normalized. It was about time. But personally, the places where I cried, when you ask me the best places, those still pop up in my head as right. मेरे लिए ऐसा वो ऋषिकेश का घाट था, you know, like मेरे साथ ऐसा हो गया था कि ना मेरे को locals कुछ थे,
जो आई थिंक मे भी टूरिस्ट थे वहाँ पे। हाँ तो उस टाइम पे ये था कि मेरी एक दोस्त थी फ्रेंच, तो मैं उसके साथ घूम रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि लाइक ये बंदा कौन है जो ऐसे गोरी के साथ घूम रहा है, लाइक हाँ कुछ हाँ हुआ होगा, लाइक हाँ वो आके हाँ मेरे से क्वेश्चन वोश्चन करने लगे, लाइक राइट जब उसको छोड़ के आया घर। राइट और मेरे से काफी एज बड़ी थी, तो ऐसा नहीं था कि लाइक मैं उसका बच्चा ही दिख रहा था, बट स्टिल उन लोगों का दिमाग ऐसा था, हाँ लाइक हाँ वो उसको लिमिटेड लिमिटेड हाँ लाइक, लिमिटेड तो वो लोग तो काफी ऐसे ना मेरा आईडी कार्ड वगैरह ऐसे पहले उन्होंने बात की मेरे से कि लाइक हम तो अंडर अंडर कवर एजेंट है वो सब। मैंने कहा हो तो तब भी आईडी तो होना चाहिए। हाँ मेरे आईडी को बताओ आईडी दिखाओ तभी मैं आगे बात करूंगा। हाँ लाइक नहीं नहीं, फिर उन्होंने पुलिस को बुला लिया, काफी कुछ सीन हुआ वहाँ पे। हाँ तो मैं काफी एकदम, और मेरे एक दोस्त था ब्रिटिश था वो, हम्म, तो मेरे को मेरी भी ब्रिटिश लोगों से बहुत बनती है, बिकॉज वो हाँ ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है मेरे को। वो राइट एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे ही बात करेंगे आपसे, आपको कुछ चीज नहीं पसंद आई तो बोल देंगे सीधा फेस पे। हम्म तो वो वहां से आ रहा था, और वो ना उसका कश्मीरी था, लाइक हम्म उसका ओरिजिन कश्मीर और अफगानिस्तान का मिक्स था, पठान। हम्म उसका नाम वसीम था। तो जैसे डेफिनेटली हाँ, हैंडसम हाँ तो वो आया सामने से। हाँ काफी काफी